Hello, dear students. Hope audio video everything is okay. Can you inform me at the chat box that everything is okay? Can we start the session? Hello, everyone. Hello, dear students. Hope audio video everything is okay. So we are going to start one another very useful session for the first MBBS students. So as the course is progressing in the different medical colleges, right now many colleges they are facing the head neck phase and the neuroanatomy portion. Yes, you can comment what topic is running in your college according to which we can modulate our next class. Okay. So we are going to start this beautiful session. This is our topic of muscles of mastication. Before starting this session, few beautiful lines for all of you. Remember, dear students, रास्ता भी जानते हो, चलना भी जानते हो, तुम आग हो तबीयत से, जलना भी जानते हो, खुद को मोम न समझो जो झट से पिघल जाओगे, तुम सूरज हो डूबकर निकलना भी जानते हो. With this beautiful lines, we are going to start this very useful session for all of the our dear students of the first MBBS. Also, it is very useful topic for the NEET PG. Sure short one question related to the muscles of mastication, its development, embryology part, or the temporomandibular joint. Movement related to the temporomandibular joint, it is caused by the muscles of mastication. So it is very important topic. So try to understand first this one. Sir, we are eating the food daily. Okay, this eating activity is done by the four muscles. These four muscles are located in the our temporal fossa and infratemporal fossa. So we are going to know about this temporal and infratemporal fossa also. Yes, this is the coronal section of the our skull. So with this beautiful three dimensional orientation, can you see this one? Yes, lal fool neela fool, anatomy beautiful. Can you see? Sir, this is our cranium. So we are going to watch on the lateral side. Can you see this one? Sir, this is our area, temporal area. So the muscle in this our temporal area is our temporalis muscle. This is the first muscle of the mastication. Agree everyone? This is the first muscle of the mastication, temporalis. Yes, you can see it is taking origin from the temporal fossa and getting insertion into the mandible. I will teach you. This is our condyloid process and here is the coronoid process. So it is getting insertion into the coronoid process. इतना जरूर याद रखना है, ये आपके प्रैक्टिकल में या आपके थ्योरी में, ये आपके नीट पीजी एमसीक्यू में आता ही है. So this is our first muscle of mastication, temporalis. We are going to learn about this one. Next, can you see this another one? Can you comment what is the name of this muscle? Yes, beta. Can you comment what is the name of this muscle? Yes. Can you tell me? Sir, this is our muscle which is taking origin from the zygomatic arch and getting inserted into the our mandible over the ramus of the mandible. Getting the point? Very good. Anshul is here. Yes, Kishan, शायरी होती रहेगी बेटा. Moon official, yes. Shruti is here. Dr. Prabhat is here. Pola is here. Yes. Now you are going to look for this all the everything. Fine. Yes, sir. What is the name of this muscle? Sir, this is the masseter. Sir, this muscle is taking origin from our zygomatic arch and getting insertion into the mandible on the outer side. Sir, it is what is the name of this muscle? Sir, it is the masseter. Okay. Yes. Now look here further. Sir, this is our next muscle. Can you see this beautiful another muscle? Look here.
Sir, this is the mandible. And when you are looking from the below side, this is our pterygoid plate. Can you see? This is the lateral pterygoid plate, and here is the medial pterygoid plate. Getting the point? So lateral pterygoid plate, the lateral surface is giving origin to the one muscle. Sir, this is known as the lateral pterygoid muscle. So this is the third muscle. This is the third muscle of the mastication. Yes, good evening, Anshul. This is the third muscle of the mastication. What is the name? Sir, this is our lateral pterygoid. And can you see this last muscle of the mastication? Sir, this is the our one muscle taking origin from the our lateral pterygoid plate. Yes, the Iron Man anatomy, the three-dimensional anatomy, Lal Fool, Neela Fool, anatomy, beautiful. Can you see? This is our lateral pterygoid plate, but medial surface of the lateral pterygoid plate. बेटा याद रखना, चाहे वो lateral pterygoid हो, चाहे वो medial pterygoid हो, both muscles are taking origin from the lateral pterygoid plate, not from the medial pterygoid plate. That is the medial pterygoid plate. This muscle is taking not origin from the medial pterygoid plate. It is again taking origin from the lateral pterygoid plate, medial surface. And where is the insertion? Sir, it is getting insertion into the our mandible along the angle on the medial side. So in this way, how many muscles of mastication? Sir, 4 muscles of mastication. So catch this point. Yes, we are going to learn 4 muscles. Yes, sir. 4 muscles of what? Mastication. Can you tell me what are these 4 muscles of mastication? First, sir, temporalis. In easy way, remember it is located, as the name is suggesting, it is located at which part? Sir, it is located at the temporal region, जहां हम गोली मारते हैं ना, यहां पर. So this is the area of the our temporalis muscle. Now the second is our masseter. कोई बताएगा बेटा ये masseter जो है वो क्या काम करता है? Yes, any peculiarity, any one peculiarity about the masseter muscle? Anyone, can you tell me? Yes, yes, yes. Sir, this is the strongest muscle of body. Yes, this is a very important question, right? Next, third is our medial pterygoid, and the fourth is their lateral pterygoid. बेटा याद रखना, आप कुछ चीज पढ़ते हो और भूल जाते हो, मतलब आप नॉर्मल हो. लेकिन अगर कोई किसी चीज को पढ़ता है, ओके, और वो हमेशा के लिए याद रहता है, मतलब समझ जाओ वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है, वो एलियन है. चुपचाप उसको बोरा ओढ़ा करके पिटाई कर दो, वो एलियन है, वो आदमी नहीं है. कहने का मतलब बेटा, अगर मान लो आप पढ़ते हो और भूलते हो, यस, मतलब हम आदमी हैं, हम नॉर्मल हैं. ओके, तो सर एग्जाम के टाइम में फर्स्ट एमबीबीएस के जो निब्बा निब्बी होते हैं वो बहुत ज्यादा सिलेबस के कारण घबराए हुए होते हैं, और जब एग्जाम आता है तो उस समय तो भाई एनाटॉमी में फिजियोलॉजी याद आता है, फिजियोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री याद आता है, पूरी कहानी खत्म हो जाती है. ओके, तो बेटा कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं भूलनी है. ओके, muscles of the mastication, when we are eating the food, when we are chewing the food, at that time the muscles which are helping in chewing activity, these are muscles of mastication. I think no need to mug up. So what are the 4 muscles of mastication? Yes, हाथ रखो बेटा, यहां पर हाथ रखो, यहां पर. I am coming close to the camera. Yes, यहां पर हाथ रखो, look here, यहां पर हाथ रखो और च्यू करो. मूवमेंट हो रहा है. यस, तो यहां पर जो मसल मूव कर रही है कोई और नहीं, ये टेम्पोरेलिस है. ये याद हुआ. अगला, यहां पर हाथ रखो बेटा, यहां पर च्यू करो. कैन यू सी, कैन यू फील? बेटा ये कोई और नहीं, ये कौन सी मसल है? मैसेटर. ओके, चलो अगला, मीडियल टेरिगॉइड, लेटरल टेरिगॉइड. बेटा ये नहीं दिखेगी, ये अंदर है. तो अंदर में ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी में अंदर में टेरिगॉइड प्लेट है, तो वहां एक मीडियल में है और एक लैटरल में है. टेरिगॉइड प्लेट से रिलेटेड है, इसलिए इसको मीडियल टेरिगॉइड और लैटरल टेरिगॉइड मसल कहेंगे. ये 4 मसल के नाम याद हुए क्या सबको? सबसे पहले, नो डाउट, नो एक्सक्यूज, वी ऑल मस्ट टू रिमेंबर दिस 4 मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन. ये याद हुआ बेटा सब लोगों को? अगर याद हुआ तो भाई आप कोई ना कोई इमोजी भेज दो ताकि मुझको ये चीजें समझ में आ जाए. ओके, फाइन.
Okay, now try to understand these medial pterygoid and lateral pterygoid muscles. Sir, these are related with the our pterygoid plate. एग्री बेटा? फाइन. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एक चीज जो आपको एग्जाम में याद रखनी ही रखनी है. इन एम्ब्रियोलॉजी किसी ने फेरेंजियल एपरेटस अपने कॉलेज में पढ़ लिया? दीज ऑल फोर मसल ऑफ मैस्टिकेशन दे आर डेरिवेटिव ऑफ विच आर्च? फर्स्ट फेरेंजियल आर्च. एमसीक्यू बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट. चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू बिमल, अंशुल, बिष्ट, पागलपंती, रेसिडेंट डॉक्टर पार्थ पटेल. थैंक यू एवरीबॉडी. आप लोगों के जो इमोजीज है उससे हमको पता चलता है कि हाँ आप सभी एक्टिव हैं, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं. ओके, तो इससे हमारी एनर्जी बढ़ती है. चलो बेटा, तो ये आपका अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सब चीज भूल जाओ लेकिन ये चीज याद रखना. यस, एम्ब्रियोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट फेरिंजियल आर्च, सेकंड फेरिंजियल आर्च, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, सो ऑन. तो ये फेरिंग्स के पास होते हैं. सबसे ऊपर वाली जो पट्टी होती है ये हमारे गाल में होती है. जब कोई थप्पड़ मारता है ना तो गाल पे जो आर्च बनता है वो क्या है? फर्स्ट फेरिंजियल आर्च. जस्ट ऐसा रखो. तो बेटा यहीं पर कौन कौन से मसल आ रहे हैं? टेम्पोरलिस, मैसेटर, अंदर में मीडियल टेरिगॉइड, लैटरल टेरिगॉइड. I will teach you these all the four muscles of mastication. Yes, these all the four muscles of mastication, they are derivative of the first arch and the nerve of the first arch is mandibular nerve. तो बेटा एक चीज क्लियर है कि अगर कोई पूछता है कि what is the nerve supply, what is the nerve supply of the temporalis, what is your answer? Mandibular nerve. अगर कोई पूछते हैं वाइवा में what is the nerve supply of the temporalis, what is your answer? Yes, nerve of the first pharyngeal arch, मैंडिबुलर नर्व. अगर कोई पूछता है व्हाट इज द नर्व सप्लाई ऑफ द मीडियल टेरिगॉइड, तो बेटा बिल्कुल भूलने की बात नहीं है, आपका आंसर है मैंडिबुलर नर्व. अगर कोई पूछता है व्हाट इज द नर्व सप्लाई ऑफ द लैटरल टेरिगॉइड, तो फिर से बेटा आपका आंसर क्या है? सर मैंडिबुलर नर्व. तो बेटा यहां पर कई सारे एमसीक्यूज हमने कर लिए. एक, दो, नर्व ऑफ द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च 3, और उसके बाद नर्व सप्लाई ऑफ द टेम्पोरलिस 4, नर्व सप्लाई ऑफ द मैसेटर 5, नर्व सप्लाई ऑफ द मीडियल टेरिगॉइड 6, नर्व सप्लाई ऑफ द लैटरल टेरिगॉइड 7. 7 MCQs we had covered till now. Agree everybody? बहुत बढ़िया अंशुल, बहुत बढ़िया. फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, यू आर राइट. एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? तो बेटा ये आपका पहला कॉन्सेप्चुअल बॉक्स हो गया, ये बिल्कुल नहीं भूलना है. ओके फाइन. नाउ few additional concept, try to catch this few additional concept. Sir, this is our yes कोरोनल सेक्शन. ये समझ में आ रहा है क्या बेटा? आराम से समझो. जब हम स्कल को ऐसा कट करेंगे ऐसा और हम पीछे से देखेंगे तो ऊपर में आपको स्कल बोन नजर आएगी क्या? सर दिस इज द स्कल पैराइटल बोन. ओके, और बेटा जब कट करोगे तो यहां पर कौन सी बोन है? सर दैट इज अवर जाइगोमेटिक बोन, जाइगोमेटिक आर्च. यस यस एलियोना, बहुत बढ़िया बेटा. ट्राइजेमिनल पार्ट 3, यू आर राइट. ओके, और जब आप नीचे की तरफ आओगे कोरोनल सेक्शन में देखोगे, देन व्हाट बोन इज विजिबल? सर दिस इज अवर रैमस. ओके, and when you are observing this is our temporal bone, correct sir? So this is our temporal bone. The lower part you will see there are the one bony projection which is lateral side. So this is the lateral pterygoid plate. But can you observe there is one another bony projection which is downside? Sir this is our medial pterygoid plate. Agree beta? Is it clear? Sir there is a lateral pterygoid plate and the our medial pterygoid plate. Okay, now catch the gap over the temporal area. This is known as the temporal fossa. Yes, it is covered by one fascia which is attached with the our superior temporal line. This bony elevation is known as superior temporal line. The temporal fascia is coming from the top, but then it is bifurcating. Yes, this is dividing into the superficial lamina and deep lamina, and it is getting insertion into the zygomatic arch, outer border and inner border. Okay sir, so this space, sir, this space over the temporal bone and between the temporal fascia, this is known as the temporal fascia fossa. And what is the main content of this temporal fossa? Yes, you will see the temporalis muscle and definitely its nerve and as well as its vessels. Agree? While can you see, ये देखो बेटा,
This is our, yes, greater wing of the sphenoid part. This is zygomatic arch. So below it, can you see this space? Yes, it is below the temporal area. So this is the infratemporal fossa. Correct, sir? It is below. That's why you will say infra. Yes, temporal region. So temporal fossa means space. मिर्जा गालिब कहते हैं सारे राज नाम में दफन रहते हैं. Getting the point? It is the space between the ramus of the mandible and our lateral pterygoid plate. Got the point? Okay. So these are the same thing, sir. Here is our temporal fossa, and here you can see the infratemporal fossa. Yes. Can you observe this beautiful image? Anyone? Can you help me? What should be the name of this muscle? Sir, it is known as the muscle which is related with the our temporal fossa. So this is our what? Temporalis muscle. Can you observe this muscle is having the vertical fiber? Yes. Oblique fiber, posterior fiber. Fine. So the our, yes, can you see? The entry fiber is vertical, the middle fiber is oblique, and the posterior fiber is totally running posteriorly. Na? Okay, sir. And here you can see the strongest muscle of the body, that is masseter. Can you see? This is our masseter. Yes. Can you see? It is having the two parts. What are the different two parts? Look here. Sir, this particular part is having the one set, and can you observe this is one another set of the muscle, first MBBS. So remember, for the first MBBS viva, this masseter muscle is having the superficial part and this is deep part. क्या कोई यहाँ INICET का बच्चा है? The question which had been asked, this masseter is which type of the muscle fiber? Option: parallel, pennate, cruciate, twisted. So you can see, sir, there is our superficial part and there is a deep part. So these are crossing together. Such kind of the muscle fiber, they are known as cruciate. Yes बेटा, तो ये आपका INICET का क्वेश्चन है. Yes, Aliona, Demetrius, this is your question. Masseter is the classical example of the cruciate. When the two sets of the different fibers are crossing together, that is a cruciate. And can you observe this another one? Yes, image based preparation. Sir, it is our mastoid process. It is our mastoid process. And here you can see the styloid process. Yes. Now can you see, this is our ramus of the mandible, and you can observe this is the condyle process of the mandible. This is our articulating surface. Here you can see the articular disc of the temporomandibular joint. Fine. And one set of the muscle is coming from the above, and it is going towards the our pterygoid fovea, and this is the another set of the muscle. Can you see? Yes. So this is our lateral pterygoid muscle, which is having the upper head and it is having the lower head of what? Sir, this is our lateral pterygoid muscle. Got the point? Fine. Yes. And in the similar way, you can see this set is our medial pterygoid muscle, which is having the superficial fiber, and another is the deep fiber. Again, you can observe in this image beta. Look here, this beautiful image. Try to understand. You are looking the our cavity from the behind. Again, the beautiful anatomy. Can you see, sir? We are going to observe this is the skull from the front, but now we are going to look from the behind. Yes, can you see? Actually, this is the our image. Fine. We are going to look the image from the behind. So that will be the your view. You can see the nasal aperture
and here is our palatine bone, that is the hyoid bone which we will remove na. And you are going to see this muscle, this is the our medial pterygoid muscle. Can you see this medial pterygoid muscle is taking origin from the medial surface of the our lateral pterygoid plate, getting insertion into the angle of mandible, but it is the deep surface, deep fiber. And you can see one more, this is the your superficial fiber which takes origin from the maxillary tuberosity. Yes sir, that is the your superficial fiber. I want to say that try to understand, ये जो हमारा मीडियल टेरिगोइड मसल है इसके दो फाइबर, एक सुपरफिशियल और एक डीप, गेटिंग द पॉइंट, फाइन. सो व्हाट यू कैन रिमेंबर, बहुत बढ़िया अंशुल, यू आर राइट, क्रूशिएट, यस. सो यू कैन ऑब्जर्व सर in this part, can you observe this is our, yes, medial pterygoid plate and here is lateral pterygoid plate. Now look the muscle fibers, yes, it is getting insertion into the angle of mandible, definitely this is medial pterygoid, and here is muscle over the ramus of mandible. So definitely it is muscle of the mastication, strongest muscle of the body, that is our masseter. And this greenish color muscle is nothing sir, it is getting insertion into the pterygoid fovea. So definitely it is our, yes, lateral pterygoid muscle. Agree beta? Okay sir. So one by one we are going to look about the each muscle. So this is the one table. Can you see? First, we are going to look for the masseter temporalis, which is fan shaped. Then we will see the masseter, which is quadrilateral. Then we will talk about the lateral pterygoid muscle, and then we will talk about the medial pterygoid muscle. So this is the session dedicated for the first MBBS. So you all must remember the origin. Then we are going to learn about the insertion. Yes, I told you nerve supply सबका मालिक एक है, कौन बेटा? मैंडिबुलर नर्व. And then we have to talk about the action. Fine. So one by one. First we are going to look for the our temporalis. Okay. So try to understand. Yes, sure, beta. But these are the classes for the first MBBS. Okay. Please make the group for the INICT and inform to the cerebellum team. The cerebellum team will arrange. I will convey your message to the our cerebellum team, beta. Okay. But these are the classes for the, especially for the first MBBS. But definitely it will be useful for the INICT, NEET PG, all, na? Okay. Yes. So try to catch this one, sir. We are going to talk about the our temporalis and this all the muscle. Can you see this one? This image, sir. The temporalis muscle, look here, sir. The temporalis muscle origin, sir, it takes origin from the our temporal fossa. Also this is covered by the one fascia, that is a temporal fascia. So it takes origin from the inner surface of the temporal fascia also. Okay sir, इतना कम से कम याद रखना, अपने बॉडी में है, रटने की कोई जरूरत नहीं है. द टेम्पोरलिस मसल, बेटा यस, इसको टच करो, मूव करो, आपको पता चल जाएगा. इट इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द टेम्पोरल फोसा. इंसर्शन, कैन यू सी? दिस इज द मैंडिबल. So this is taking insertion into the our coronoid process of the mandible. Yes, it is taking insertion into the our tip and along the entry border. खत्म, टाटा, बाय बाय, गया. ये देख लो, look here, sir. This is our muscle. Which muscle? Temporalis. So it is taking origin and it is getting insertion into the our what? Can you see? This is the coronoid process tip and also along the entry border. Yes. So this image is indicating for the your temporalis. अब बेटा फर्स्ट एमबीबीएस के बच्चों को डायग्राम बनाना पड़ता है, तो एग्जाम में जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो व्हाट यू हैव टू डू? सिंपल सा आपको काम करना है. क्या सर? दिस इज अवर मैंडिबल condyle process, this is the coronoid process, two process. Mandible is having the two part. What are the two part? Sir, ramus and this is the body. इतना बन जाएगा क्या? कितना आसान है. And then you can show the temporalis muscle. Sir, this temporalis muscle is taking origin from the our temporal fossa and these are taking insertion into the our, yes, can you see, tip of the coronoid process and also along the entry border. खत्म, टाटा, बाय बाय, गया.
एग्जाम में बना सकते हैं बेटा इतना? यस सर, यू कैन से द ओरिजिन वेयर, एक लाइन, बहुत सारी चीजें बुक में दी लेकिन इतना याद रखो, टेम्पोरल फोसा। यस, इंसर्शन कहां है बेटा? यहां पर इंसर्शन, सो दिस इज अवर यस coronoid process, fine, at the tip and along the our yes entry border. कुछ extra point osteology के लिए, this is our condyle and here is our coronoid process, two process and two parts of the mandible. Sir, it is our ramus of the mandible and here is the body of mandible, your osteology part. What is the name of this muscle beta? Sir, this muscle is definitely known as temporalis. INICT का क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द शेप? सर, फैन शेप. सो दे आर आस्किंग अबाउट द मसल अरेंज फाइबर, अरेंजमेंट ऑफ द मसल फाइबर एंड द शेप ऑफ द मसल. एग्री बेटा? फाइन, ओके, यस, थैंक यू अंशुल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा. सो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम. ओके बेटा, ओरिजिन हो गया, इंसर्शन हो गया, नाउ सप्लाई. सर, सबका मालिक एक है, कौन? हमारा मैंडिबुलर नर्व. सो दिस इज योर व्हाट? ओरिजिन एंड हियर इज द योर insertion, coronoid process. Yes, now supply, bolo, it is the derivative of the first arch, so it is supplied to the nerve of the first arch, that is the mandibular nerve. अब हम बात करते हैं बेटा एक्शन की. यस, आपको याद है क्या? मैंने एक फंडा बताया था, जो नदी जहां रहती है, जहां बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है. क्योंकि इस एरिया में हमारी मैंडिबुलर नर्व रहती है, तो यहां पर जो भी मसल आएगी सबको मैंडिबुलर नर्व सप्लाई करेगी. यस, दिस इज द एरिया वेयर मैंडिबुलर नर्व इज फ्लोइंग, सो दिस एरिया इज सप्लाइड बाय मैंडिबुलर नर्व. एग्री बेटा? यस, आई एम टेलिंग इन हिंदी ऑल्सो, इन इंग्लिश ऑल्सो. ओके सर, नाउ ट्राई टू कैच दिस पॉइंट. सर, another rule, Escavian rule you can say. Sir, jidhar muscle udhar movement. I told you, if any muscle is crossing the joint from the lateral side, when it will contract, it will move laterally. Any muscle is crossing the joint from the medial side, when it will contract, it will pull medially. Yes, if any muscle is crossing from the front, when this muscle will contract, it will move front. Yes, if any muscle is crossing the joint from the back, when this muscle will contract, it will move back. मतलब where muscle goes, there movement flows. Simple beta, getting the point? Fine. Yes, thank you Dr. A Singh, thank you beta. What you have to remember beta? Yes sir, where muscle goes there movement flows. जिधर मसल उधर मूवमेंट. मसल अगर आगे है तो आगे मूवमेंट, मसल अगर यस एल्बो जॉइंट है, अगर मसल आगे है तो आगे मूवमेंट, मसल अगर पीछे है तो पीछे मूवमेंट, अगर कोई मसल लैटरली है तो लैटरल मूवमेंट, अगर कोई मसल मीडियल से जा रही है तो मीडियल मूवमेंट. सिंपल लॉजिक है बेटा, एनाटॉमी में कुछ रटना नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट बस लगाना होता है. ओके बेटा? ओके सर. सो एक्शन. सर, दिस मसल इज हैविंग द थ्री टाइप्स ऑफ द फाइबर. चलो देखते हैं कौन लॉजिक लगाता है. यस सर, दिस इज द आवर एंटीरियर फाइबर, हियर यू कैन सी द मिडिल फाइबर एंड दिस इज द पोस्टीरियर फाइबर. तो बेटा जब ये मसल खींचेगा तो मैंडिबल को ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए? खुद दिमाग लगाओ. ओके, जब ये टेम्पोरलिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये इलास्टिक बैंड की तरफ मूव करेगा, व्हेन दिस टेम्पोरलिस मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग, मैंडिबल शुड गो डाउन और अबव. Yes. दूसरा क्वेश्चन, this is the posterior fiber, oblique fiber. When this posterior fiber will contract, when this posterior fiber will contract, yes, when this posterior fiber will contract, then mandible should go front or back. दो क्वेश्चन है बेटा, चलो बताओ, ट्राई करो. Yes, try to understand बेटा. When this anterior fiber is contracting and posterior fiber, yes, try to catch. Yes, Anshul, what should happen? Look here, sir. When this front fiber will contract, it will pull the mandible above. तो ये क्या करेगा? Close. Sir, when this posterior fiber is contracting, it will pull the mandible back. खत्म, टाटा, बाय बाय, गया. What you have to remember, बेटा? Action. Sir, anterior and middle fiber, they are elevator of what? Jaw, while the posterior fiber, sir, it will move the jaw back. This is the protection
This is the retraction. Forward movement of the jaw, protraction. Backward movement of the jaw, retraction. So remember, it is responsible for the retraction. तो बेटा ये INI-CET का क्वेश्चन आया हुआ है, कैटेगरिक इमेज होता है. द क्वेश्चन इज द ओनली retractor of jaw. What is your answer? Temporalis. And which fiber? You can say the posterior fiber. This is very important. Yes, viva question as well as INI-CET question. Agree everyone? Fine beta. Hope you all are catching the points. Any doubt till now? आगे बढ़ें. ओके फाइन, डन. ओके चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. नाउ कैन यू सी द नेक्स्ट मसल, मैसेटर. लुक हियर सर, दिस इज आवर मैंडिबल. condyle process, coronoid process. Okay, yes sir, condyloid process, coronoid process. This is the ramus of mandible and here is the body of the mandible. Agree? Now here is our zygomatic arch. Sir, this is our zygomatic arch. Fine. So the entry part of this zygomatic arch is giving origin to the fiber. Yes sir, which is taking insertion into the ramus of mandible. Yes, it is our which fiber? It is the superficial fiber. But can you see there is a one another set which is taking origin from the posterior part and crossing the muscle? Yes, it is crossing the muscle obliquely. That's why it is cruciate. And this all the muscle, can you see? It is crossing. So this is which type of the muscle fiber? Cruciate. INI-CET question. And this all are taking insertion into the our ramus of mandible as a quadrilateral area. So this is our area of the masseter. Getting the point? Yes, insertion on the ramus and coronoid process of the mandible also. Got the point? So this is, अरे नहीं भाई एलियोना, यहाँ लॉकिंग अनलॉकिंग नहीं आएगा. Locking and unlocking movement is specifically at the knee joint. Okay, this is the closer of the jaw and the opener of the jaw. Only these words we use, na? Fine. Okay, sir. So this is the masseter. So we had seen about the our origin, and here is point regarding the insertion. Anyone, can you tell me what should be the nerve supply? चलो बताओ बेटा. Nerve supply and action. Action I am telling you, you have to comment at the nerve supply. Sir, when this muscle will contract, they will cause elevation of the jaw. Elevation of the jaw. Jaw को क्या करेगा? Elevate करेगा. So remember the action. Action is closure. Sir, it is responsible for the closure of jaw. I think no doubt. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया एलियोना, Demetrius, you are right. The nerve supply is mandibular nerve. बहुत बढ़िया बेटा. Okay, very nice. Now after this, origin, insertion, nerve supply and action. Fine. We are coming for our other muscle, the medial pterygoid and the lateral pterygoid. Again try to understand this image. आराम से बेटा, प्यार मोहब्बत से. Yes, anatomy is very beautiful subject. Can you see? Sir, this is our what? Condyle. Sir, it is our condyle. Yes, and here you can see the ramus. We are cutting the ramus. This is the body, na? ठीक है? How many parts of the mandible for the first MBBS? Sir, body, and this is ramus. We are cutting the ramus part. So this is the cut end of the ramus. There is a one depression in the our condyle process. Sir, this depression is known as pterygoid fovea. What is the name of this depression, beta? Sir, this is very important point. This is our pterygoid fovea. Okay, now you can observe the muscle, lateral pterygoid muscle. It is having the two head, upper head
and another part, can you see, this is your lower head. Yes sir, it is our lower head. So there are the two heads, na, upper head and lower head of the lateral pterygoid muscle. Okay. Yes, now look, this our upper head of the lateral pterygoid, it is taking origin from the infratemporal surface of the greater wing of the sphenoid. स्फिनॉइड बोन के बेटा तीन पार्ट, फर्स्ट एमबीबीएस क्वेश्चन, बॉडी ऑफ द स्फिनॉइड, लेजर विंग ऑफ द स्फिनॉइड, ग्रेटर विंग ऑफ द स्फिनॉइड. आई एम शोइंग यू इन द 3D. Look here, sir. This is our, yes, skull. We are going to cut it and we are going to open it. Yes, sir. So this is our skull. We are cutting and we are going to open it. Sir, this is our foramina magna. This is the sella turcica where pituitary gland is located. Sir, this is the laser wing. ये छोटे पंख की तरह दिखता है ना. Sir, it is the laser wing. Sir, here is the body. And this portion is the greater wing of the sphenoid. Na? This is the sphenoid bone. So, can you see? In this sphenoid bone, sir, this is the our sphenoid bone part. Yes, this is our infratemporal surface. ये temporal bone है, ये उसके नीचे का surface. So, this is the infratemporal surface and you can see one crest. This is the crest of the greater wing. और यहां पर बेटा आपको दिख रहा है this bony part. This is the lateral pterygoid plate and here is the medial pterygoid plate. So, remember the lateral pterygoid muscle, it is having the two origin, upper head, lower head. Upper head is taking origin from this infratemporal surface of the greater wing and this is the crest, while the lower head, it takes origin from the lateral surface of the lateral pterygoid plate. Agree beta? What you have to remember, sir, this is taking origin from the infratemporal surface, upper head of the greater wing of the sphenoid as well as infratemporal crest. Okay, तो इसका origin कहाँ से हो रहा है? Sir, it is taking origin from the infratemporal crest as well as this infratemporal surface. Yes, it is giving origin to the our upper head of the lateral pterygoid, while the our lower head, it is taking origin from the, yes, lateral pterygoid plate, the lateral surface. So this is the our lower head. These are the our what? Remember origin. So origin is having the two heads, na? Origin and this is origin. And what is the insertion? Only one point you have to remember, insertion. That is your pterygoid fovea. But one recent question, NEET PG 2023. Yes. Look here. From the first MBBS, you can catch, you can solve each and every, you can crack each and every exam pattern. Why? क्योंकि बेटा याद रखना, if your first MBBS basics are strong, in that situation, your preclinical, paraclinical subjects will be strong, your clinical subject will be strong. और बेटा कुल मिला के नीट पीजी INICT में पूछता कहां से है? Yes, everything is given in the your first MBBS textbook, your Vishram Singh anatomy sir textbook, your BD Chaurase sir textbook, your Gray's anatomy. तो बेटा अपने बेस को मजबूत बनाओ. फर्स्ट ईयर में जितने अच्छे से एनाटॉमी पढ़ सकते हो बेटा, उतने अच्छे से एनाटॉमी जिंदगी में कभी दोबारा नहीं पढ़ सकोगे. फर्स्ट एमबीबीएस में जो आप कैडेवर देखोगे बेटा, जिंदगी में दोबारा कैडेवर देखने नहीं मिलेगा. आपको तभी मिल पाएगा जब आप पीजी में एनाटॉमी पीजी करते रहोगे तो. ओके, तो बेटा इसलिए बहुत मन लगा के कैडेवर से आपको लर्न करना है, इन थ्योरी टेक्स्ट बुक से आपको लर्न करना है, क्योंकि बीता वक्त कभी वापस नहीं आता. Fine. So this is the beautiful image. So the question in the NEET PG 2023, one student was yawning in the classroom. Suddenly, he felt pain at the temporomandibular part and his mouth remained open. He is not able to close the jaw. अब वो जो स्टूडेंट है एक बार जम्हाई लिया और फिर मुंह को बंद नहीं कर पाया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया. This is the line. उसका मुंह खुला का खुला रह गया. Getting the point? Okay. So there is the question. The articular disc of the temporomandibular joint in this case is the part of. तो उसने घुमा करके क्वेश्चन को पूछा. सिंपल सी चीज है और आपके फर्स्ट एमबीबीएस के टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. एंड यू कैन क्रैक फ्रॉम दिस इमेज ऑल्सो बेटा. ये देखो, कैन यू सी दिस लैटरल pterygoid muscle is coming
and it is inserting into the pterygoid fovea, but it is having one small degenerated part which is within the our temporomandibular joint cavity. This is our temporomandibular joint, which is participated by the temporal bone and the mandible bone. So this is the temporomandibular joint. Here you can see one articular disc. This articular disc is nothing. आपके बीडी चौरसिया सर में, विश्राम सिंह सर की नोट में टेक्स्ट बुक में सीधा सीधा एक लाइन लिखा हुआ है, these are degenerated part. Yes, this articular disc is degenerated part of our lateral pterygoid muscle. So what you have to remember, this articular disc is nothing, it is degenerated part of our, yes, lateral pterygoid muscle. These points you must know. Getting the point, beta? Yes, this is the your NEET PG question. Okay, sir. So now, can you tell me the nerve supply and then action? We are going to talk about the nerve and action. Yes. Now supply, definitely it is a derivative of the first arch. So it is supplied by the nerve of the first arch, that is a mandibular nerve. तो ये तो भूलना ही नहीं है सर, ये तो याद हो गया. सोते जागते खाते उठते बैठते हमको ये भूल ही नहीं सकते. फाइन, एक्शन की बात करते हैं. तो एक्शन को समझते हैं बेटा. सी हियर, जिधर मसल उधर मूवमेंट. लुक हियर सर, we can see this is the our lateral pterygoid muscle. Fine. Now try to understand. Origin is fixed, insertion is movable. तो ये फिक्स रहता है ओरिजिन और ये इंसर्शन मूव करता है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो मैंडिबल आगे जाएगी कि पीछे जाएगी? बोलो, मैंडिबल आगे जाएगी कि पीछे जाएगी? फाइन, ओके, बताओ बेटा, ये मैंडिबल आगे जाएगी कि पीछे जाएगी? सर, जिधर मसल उधर मूवमेंट, बिकॉज दिस मसल इज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट, सो व्हेन इट विल कॉन्ट्रैक्ट इट विल पुल द मैंडिबल front. Remember this MCQ. Only protractor of the our mandible. Answer is the lateral pterygoid. Yes. Okay, we will see. एक और मसल रहेगी मीडियल टेरिगॉइड, वो भी प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन दो मसल है जो प्रोटेक्ट करेंगे. और हम देखते हैं बेटा इसको, क्वेश्चन को. कैन यू सी दिस अनदर वन? अगर आप इसके डायरेक्शन को ध्यान दोगे, सो कैन यू सी इट इज लिटिल बिट डाउन साइड. सो व्हेन दिस मसल विल कॉन्ट्रैक्ट, जिधर मसल उधर मूवमेंट, इट विल प्रोट्रूड, but also it is responsible for the our mandible movement downside. So this is the question. Only, yes, actually two protractor, medial pterygoid, lateral pterygoid, but only depressor of the jaw. Yes, जब ये मसल नीचे खींचेगी तो मैंडिबल नीचे जाएगा. Only depressor of the jaw. Answer is the lateral pterygoid. Also remember, the lateral pterygoid of this side and medial pterygoid of the another side, they will combinedly contract and they will pull the mandible to the opposite side. Fine. And opposite movement will occur. Fine. So in that situation the mandible will go in this way. So there is the rhythmic movement and mandible is moving side to side. Why? Look here sir, when this will contract, it will move the our mandible to opposite side. Fine. So it is responsible for the side to side movement also. What you have to remember, sir, this our lateral pterygoid muscle, sir, this lateral pterygoid is responsible for the movement. Lateral pterygoid muscle movement. Yes, lateral pterygoid action. You can remember with the mnemonic Delhi Public School, DPS. Sir, D for depressor, sir, P for protractor, sir, S for side to side. So MCQ, MCQ, MCQ. What you have to remember, this is very important question for the INI, CET as well as the FMG exams, NEET PG exam. What you have to remember, sir, this is only depressor of jaw, but also remember among muscles of what? Mastication. Among the muscles of mastication, yes, this is our what? Only depressor of the jaw. इकलौती मसल जो जॉ को डिप्रेस करेगी. अदरवाइज टेम्पोरलिस, मैसेटर,
medial pterygoid, they all are elevator. So no excuse, no excuse with this point, na? No excuse with this point. It is very very important statement. लेकिन बेटा आईएनआईसीटी में कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आया था, विच इज द मेन depressor of jaw in body. We are not talking only about the muscle of mastication, we are talking about all the muscles. So remember, there is one digastric muscle, anterior belly of digastric, posterior belly of digastric. When these muscles are contracting, they are pulling the jaw downside. So remember, answer is digastric. And another muscle from the genial tubercle to the hyoid bone, that is the genioid. So this is a reference from the your Gray's Anatomy 42nd edition. Actually it is given in the your 41st and 41st edition, every edition, but there was the one controversial question. That's why this statement is important. The main depressor of the jaw in body, तब बेटा lateral pterygoid नहीं कहना. But if you are talking about the four muscle of mastication only, then you have to say yes, the lateral pterygoid muscle. Agree beta? Fine. So these are the things which you have to remember. अभी तक कोई डाउट किसी को? Agree beta? Fine. Look here. What is the our controversial question? अब बेटा controversial question आया ना? Yes. For the INI, CET and NEET PG एग्जाम. यस, तो ये क्वेश्चन क्या था बेटा आपका कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन? क्वेश्चन आपका ऐसा था, कैडेवरिक इमेज था और उसने पूछ दिया मेन एक्शन ऑफ लैटरल pterygoid. अब ऑप्शन ए प्रोट्रैक्शन, बी डिप्रेशन, सी साइड टू साइड, एंड उसने बोल दिया डी. ओके, none. Yes, you know the controversial question always I'm saying to the students, who is wife of Salmon Boy? You all know answer is none, but they will put such kind of the controversial question sure. Okay, उसकी शादी नहीं हुई है तो कैसे हम किसी को ऑप्ट कर सकते हैं, और आप खोजोगे नन को, लेकिन बेटा नन वहां पर नहीं दिया रहेगा. ओके फाइन. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, they are asking controversial question, they will put the option accordingly. और मैंने आप लोगों को चार ऑप्शन बताए, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, लूलिया और इसके साथ में जैकलिन फर्नांडिस. आप खोज रहे हैं कि चलो यार ऑल ऑफ द अबव दे दे तो वो भी मार्क कर दें, लेकिन ऐसा भी आपको नहीं मिलेगा. गेटिंग द पॉइंट? तो अब आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, आपको अपडेट में जाना है. वॉट एवर द अपडेट इज रनिंग देयर यू हैव टू नो. फाइन, you cannot mark the Aishwarya Rai. Why? Because Bachchan family will not leave you. Exclude them. You cannot mark the Katrina auntie. Why? Because House the Josh will get down. विकी कौशल नहीं छोड़ेगा. चांद सितारे वो बाद में तोड़ेगा, पहले तुम्हारा सिर फोड़ेगा. So you cannot mark this one. Also, now she is married. Okay. Also, you can mark the Lulia. Fine. बहुत पहले लुलिया का खबर था, लेकिन जब लॉकडाउन के बाद जब हम दिल्ली में गए क्लास लेने के लिए, तो उस समय जब ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन का हम एग्जांपल दे रहे थे, तो पीछे से आवाज आई फार्म हाउस. बस यही अपडेट जो आपको हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड के बारे में पता रहता है, वो आपको अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में पता होना चाहिए. यस, जो लास्ट अपडेट था वो फार्म हाउस जैकलिन फर्नांडिस आंटी का था. तो अकॉर्डिंग टू द अपडेट जो रिसेंट इवेंट होता है, उसके बेसिस आप जैकलिन आंटी को मार्क कर सकते हैं. गेटिंग द पॉइंट एवरीबॉडी? फाइन. सो रिमेंबर, in this question pattern, whatever the nearby answer, Taj Mahal is situated, Agra is the best answer. But if it is not given, then you can mark Delhi. If Delhi is not given, then you can mark India. Taj Mahal is situated in India, true or false? Yes, it is true. If India is not given, then you can mark the Asia. If Asia is not given, you can mark the Earth also. Okay? Yes.
तो बेटा जो नियर मोस्ट आंसर वो आपको करना रहता है. नाउ कैच दिस पॉइंट सर, दिस इज द अवर थिंग in our lateral pterygoid. Sir, definitely you will not mark the none. Sir, side to side, it is the action done by the our, yes, you can say the medial pterygoid also. बट नाउ देर इज अ कंफ्यूजन फॉर द प्रोट्रैक्शन एंड डिप्रेशन. हमेशा याद रखना बेटा एमसीक्यू एग्जाम में दो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है, दो ऑप्शन में, दो तो इजीली रूल आउट हो जाते हैं. अब मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया सर, ड्यू टू दिस लाइन ओनली डिप्रेशर ऑफ द जॉ एमंग द मसल ऑफ मैस्टिकेशन, बच्चों ने क्या कर दिया, मार्क कर दिया डिप्रेशन. व्हाई? बिकॉज ओनली डिप्रेशर ऑफ द जॉ लैटरल टेरिगॉइड, ये कर दिया. लेकिन बेटा याद रखना, जिसको ग्रेज एनाटॉमी की बात पता होगी, द मेन डिप्रेशर ऑफ द जॉ इन द बॉडी दैट इज डाइगेस्ट्रिक एंड जिनियोहाइड, इट इज क्लियर कट रिटन इन योर ग्रेज एनाटॉमी. तो बेटा इस कारण से इस क्वेश्चन में आपका बेटर आंसर क्या हो जाएगा सर, ए इज बेटर आंसर देन बी. एक्चुअली बेटा ए भी राइट है, बी भी राइट है और इसके साथ में सी भी राइट है, लेकिन मेन एक्शन कौन सा है? तो बेटा इस सिचुएशन में आपको कंट्रोवर्सी को दूर करना पड़ेगा. ग्रेज एनाटॉमी इज क्लियर कट सेइंग दैट मेन डिप्रेशन इज डन बाय, yes, side to side is also done by the our medial pterygoid. Fine. The main depressor of the jaw is our digastric and genioid. तो बेटा इस अपडेट के साथ, योर ग्रेज एनाटॉमी के साथ जब आप चलते हैं, लेटेस्ट अपडेट, yes, 42nd edition, but it is given in the 41st 40 also. तो बेटा याद रखना इस INICT के क्वेश्चन में आपका आंसर क्या था, प्रोट्रैक्शन इज द मेन एक्शन, फॉरवर्ड मूवमेंट. ओके, यस. तो मीडियल टेरिगॉइड से भी ज्यादा पावरफुल एक्शन इसका होता है. ऑल्सो यू कैन रिमेंबर द एक्शन ऑफ द मीडियल टेरिगॉइड. ओके, तो बेटा मीडियल टेरिगॉइड का एक्शन, जैसे कि लैटरल का क्या था, DPS, यहां पर आपको क्या करना है बेटा, डी को हटा देना है और इसकी जगह में ई लगा देना, EPS. सो द मीडियल टेरिगॉइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिवेशन, फॉर द प्रोट्रैक्शन एंड फॉर द साइड टू साइड. MCQ 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 है कि नहीं? बढ़िया, आसान है कि नहीं बेटा? आसान समझोगे तो आसान लगेगा, कठिन समझोगे तो कठिन लगेगा. तो ये बढ़िया सा आपका एक निमोनिक हो गया, DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल, एंड दिस इज योर EPS, यस, एलिवेशन, प्रोट्रैक्शन एंड साइड टू साइड मूवमेंट. ओके, तो अब हमारा सिर्फ इकलौती मसल बची हुई है, कौन सी सर? दैट इज आवर medial pterygoid. So just observe this beautiful three-dimensional orientation. Can you observe, sir? This is our, yes, medial pterygoid. So this medial pterygoid is again having the two head. One is superficial and another is deep. Superficial head is coming from the maxillary tuberosity. मैक्सिला के पीछे, थर्ड मोलर टूथ के पीछे एक एलिवेशन होता है, वहां से निकलता है, एंड इट इज गेटिंग इंसर्शन इनटू द मैंडिबल, एंगल ऑफ मैंडिबल. कैन यू सी? This is your, yes, lateral pterygoid plate, but medial surface. It is giving origin to the our deep head. You can correlate with the three-dimensional orientation as well as our this beautiful table. Yes, sir. Can you see, sir? The lateral pterygoid is having upper head, lower head. We completed. But the medial pterygoid, it is having the superficial head and deep head. So the superficial head from the maxillary tuberosity. Yes, tuberosity of the maxilla. Deep head from the medial surface of the lateral pterygoid plate. Okay, sir. Again, everything, mandibular division, definitely. And what is the action? Elevation, protraction, as well as it helps in the side to side. So I think there is a no problem. There is a no problem in this our, yes, you can see the medial pterygoid muscle. Sir, this is the our superficial head, which is taking origin from the maxillary tuberosity. Yes, can you see the deep head? Deep head we are drawing with the dotted line. So this deep head of the medial pterygoid, it is taking origin from the lateral pterygoid plate. Okay, so these are our what? Origin. Insertion, yes, insertion, it occurs at angle of
mandible. Getting the point? Yes sir, it is occurring at the angle of the mandible on the inner side. Agree beta? Getting the point? Fine. Okay sir, so these are the points regarding our muscles of mastication. Remember, these are the very very important topic. So thank you very much. At the last, our great teacher Dr. APJ Abdul Kalam sir, don't read success stories, you will get only message. Read failure stories, you will get some ideas to get success. So thank you very much. If in doubt, please ask. It is very important topic for the theory, for the practical, for the osteology. Yes, and definitely one question sure in your INICT especially. Also, you can ask about the your NEET PG exam. Okay. Yes. Fine, everyone. So here one quick summary for all of you. चलो एक बार फिर से summary करते हैं. एंड ऑल्सो यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल इमेज ना. ये देखो एक और छोटा सा हम देखते हैं बेटा कि कैसे कैसे ये जो मसल्स है वो एक्शन शो करते हैं. सो यू कैन ऑब्जर्व सर, दिस इज अवर मैंडिबल, कॉन्डाइल प्रोसेस, कोरोनॉइड प्रोसेस. दिस इज योर एंगल and here is the your ramus of the mandible. Okay, can you see? This is our temporalis. So when this temporalis will contract, it will elevate and it will retract. Okay sir, this is our masseter. So when the masseter will contract, it will bring the mandible upside. Yes, it will elevate the mandible. And can you see, this is our medial pterygoid. So this medial pterygoid is responsible for the elevation, protraction. Also it is helping in side to side, EPS. And you can see the lateral pterygoid muscle. This is your lateral pterygoid muscle, which is getting into the our insertion into the pterygoid fovea. So it is related with our DPS action na, Delhi Public School. Yes, D for depressor, P for protraction, S for side to side. And can you see, this is your anterior belly of the digastric, and here is the your, yes, posterior belly of digastric. So when this digastric muscle will contract, it will cause down movement, jidhar muscle udhar movement. And now you can observe, yes, our other muscle which are related to the hyoid, they are also depressor. We will see later. Fine. Yes, Suman Mohanty, what we have to repeat बेटा? प्लीज आस्क. मुझको ऐसा लग रहा है कि आप क्लास में बाद में आए हैं, यही तो रिपीट था, है ना? फिर भी अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर चीज को रिपीट करना, प्लीज इन्फॉर्म मी, आई विल रिपीट ना, डोंट वरी. अगेन विद द हेल्प ऑफ द 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन. फिर से देखो बेटा सर, दिस इज अवर स्कल. यस, कैन यू सी, दिस इज अवर टेम्पोरल एरिया. द मसल विच इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द अवर टेम्पोरल एरिया, दैट इज अ टेम्पोरलिस मसल. यस. Now, can you see this bony part? Look here, sir. This is the infratemporal area. Fine. And this is your, yes, infratemporal crest. ये जो bony line दिख रही है ना नीले कलर की, ये क्या है? Infratemporal crest. Infra मतलब नीचे, temporal bone की नीचे एक elevation है. So what you will say, sir? This is the infratemporal crest. Okay. Now try to understand. This is our lateral side pterygoid plate. और ये क्या है? मीडियल साइड का टेरिगॉइड प्लेट. फाइन. सो यू कैन ऑब्जर्व द लैटरल टेरिगॉइड प्लेट. इट इज रिलेटेड विद द आवर ओरिजिन ऑफ द मीडियल टेरिगॉइड एंड लैटरल टेरिगॉइड. बेटा याद रखना, मीडियल टेरिगॉइड का कोई रिलेशन नहीं, ओनली द लैटरल टेरिगॉइड प्लेट. इट इज गिविंग ओरिजिन टू द लैटरल टेरिगॉइड and the medial pterygoid, both the muscle. Fine. And now I am going to show you these muscles again. Okay. Yes sir, look here. This is the our temporalis. Can you see? yes Gaurav, temporomandibular joint dislocation. चलो वो भी मैं बताता हूँ, वो हम टीएमजे में देखते हैं, लेकिन चलो अभी फिर से आपको बताता हूँ. टेम्पोरलिस, एक चेंज, एक लाइन, ओरिजिन फ्रॉम द टेम्पोरल फोसा, इंसर्शन एट द कोरोनॉइड प्रोसेस, खत्म, टाटा बाय बाय, गया. नाउ सप्लाई मैंडिबुलर नर्व, एक्शन, एलिवेशन एंड ओनली रिट्रैक्टर ऑफ द जॉ. खत्म बेटा, इतना याद रखना. समरी ऑफ द टुडेस क्लास. मैसेटर, दिस इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द our zygomatic arch. Insertion, ramus of mandible. Now supply, mandibular nerve. Action, when it will contract, it will cause elevation, strongest muscle of the body. एक एक लाइन में हमने समरी की. Now can you see the
Next muscle, look here, sir, this is our lateral pterygoid. So this lateral pterygoid muscle is having two head, upper head, lower head. Upper head takes origin from the infratemporal surface and our infratemporal crest. लोअर हेड इट टेक्स ओरिजिन, एक लाइन बस याद रखना, क्या, लैटरल सरफेस ऑफ द लैटरल टेरिगॉइड प्लेट, इंसर्शन, एक लाइन बस याद रखना, टेरिगॉइड फोविया. नाउ सप्लाई मैंडिबुलर नर्व, एक्शन डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, डी फॉर डिप्रेशर, पी फॉर प्रोटेक्टर, एस फॉर साइड टू साइड, खत्म. नेक्स्ट लास्ट, सर दिस इज आवर मीडियल टेरिगॉइड मसल. Yes, origin superficial head, deep head. Superficial head it takes origin from the our remember maxillary tuberosity. एक पॉइंट याद रखना, क्या, maxillary tuberosity. While the deep head it takes origin from the medial surface of the lateral pterygoid plate. Insertion एक line, medial angle of the our mandible, ramus of mandible. Yes, medial side na, not the lateral side. Now supply again mandibular nerve, action EPS, elevation, protraction, side to side, खत्म, टाटा बाय बाय, गया. Now look, the temporomandibular joint dislocation एक बच्चे ने पूछा, try to understand when the patient is doing excessive forcefully yawning, जोर से कोई जमहा रहा है, या फिर ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ द माउथ देयर इज अ पंच मूवमेंट और ट्रॉमा, तो इन सभी चीजों से क्या होता है, हमारा ये जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, कैन यू सी the temporal bone, the mandibular bone. So the articulation between temporal bone and the mandible is the temporomandibular joint. So it is coming downward. और बेटे ये जाइगोमेटिक प्रोसेस का एक एलिवेशन नजर आ रहा है, दिस इज द आर्टिकुलर ट्यूबरकल. तो बेटे ये डाउनवर्ड जाता है, फिर ये फॉरवर्ड आ जाता है, और फिर ये अपवर्ड में जाकर के लॉक हो जाता है. सो द पेशेंट विल प्रेजेंट विद ओपन माउथ, मुंह खुला का खुला रह जाएगा. ओके, दैट इज आवर ओपन माउथ. फाइन. ओके सर, नाउ try to catch this another point. Look here, sir, the patient is presenting with the open mouth in your clinic. What you will do, सीधे ऑपरेशन नहीं करना. फर्स्ट you will wear the gloves, you will insert the hand within the mouth. आप क्या करो बेटा, माउथ में हैंड को इंसर्ट करोगे ऐसा. नाउ यू आर इंसर्टिंग, देन यू विल मूव द डाउन. तो जब आपने मूव अपने हाथ को नीचे डाउन किया, यस, यू विल होल्ड द रेमस ऑफ द मैंडिबल, देन यू विल मूव डाउन. तो बेटा ये जो आर्टिकुलर ट्यूबरकल के आगे आगे था, तो ये डाउन जाएगा. देन मूव योर हैंड बैक, तो ये आर्टिकुलर ट्यूबरकल बैक जाएगा, एंड देन रिलीज, तो ये अपने जगह पर एक ऑडिबल क्लिक की आवाज के साथ फिट हो जाएगा. गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसलोकेशन. सो इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द ऑर्थोपेडिक्स आल्सो. What is the direction of the temporomandibular joint dislocation? Anterior dislocation. MCQ orthopedics cover कर रहे हैं. What is the direction? Downward. Then you can say, sir, the forward. Yes, downward, then forward, then upward. What is the direction of the reduction? Downward, backward. अब बेटा उसको फोर्सफुली अपवर्ड नहीं करना ना, रिलीज करना है. So your direction of the reduction, downward, backward, and release. So this is your clinical point. Okay. फाइन. यस बेटा. गौरव, एक हिट क्वेश्चन आता है, नर्व सप्लाई ऑफ एनी मसल. सडनली इन योर एफएमजी एग्जाम दे विल आस्क द क्वेश्चन नर्व सप्लाई द टेम्पोरलिस. उस समय बेटा याद नहीं आता कि ये कौन सी मसल है, कहां पर है, नर्व सप्लाई क्या होगी. इन माय बॉडी देयर आर द 639 मसल्स. हाउ आई कैन रिमेंबर ईच मसल एंड द ईच नर्व सप्लाई? यू हैव टू अप्लाई दैट सेम हिल्टन लॉ व्हिच आई एम टीचिंग एवरी टाइम टू द स्टूडेंट. यस, रिमेंबर, जो नदी जहां रहती है, जहां बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है. सो दिस इज द एरिया. सर दिस इज द एरिया ऑफ द मैंडिबल. सो विच नर्व इज फ्लोइंग हियर? मैंडिबुलर नर्व. सो एनी मसल एट दिस एरिया you can say the mandibular nerve. Yes, the muscles at this area mandibular nerve. So what is your answer, sir? Apply logic, other forcefully your logic, common sense logic. These all are the muscles of the first mandibular arch, and the nerve of the first mandibular arch is the mandibular nerve. So definitely these are supplied by the mandibular. So temporis nerve supply mandibular nerve, mesenteric nerve supply mandibular nerve, medial pterygoid nerve supply mandibular nerve. Yes, lateral pterygoid nerve supply your mandibular nerve. नीट पीजी का क्वेश्चन क्या था? Yes, recent NEET PG 2023 question. The articular disc is remnant of which muscle? Answer is again lateral pterygoid muscle. और बेटा INICT में पहले इसके खूब क्वेश्चन आते थे कैडेवरिक इमेजेस के साथ में ना. फाइन. ओके गौरव, गॉट द पॉइंट.
Yes, I repeated the movement also, Suman. Fine. So thank you very much. God bless you all. So ending this session with this beautiful lines. Yes. Remember मेरे बच्चों, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। जब हम मेहनत करते हैं, जब हम कोशिश करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हर चीज को हम थ्रू आउट ब्रेक कर दें और अपने मुकाम को हासिल करें। तो बेटा इसके लिए हम शिद्दत से लगे रहते हैं और हमारी कोशिशें रंग लाती है और ये दीवार जो है पर्दों की तरह हिलने लगती है। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगे, लेकिन शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। लेकिन बेटा अगर आप अपने काम को पूरी दुनिया में दिखाना चाहते हो तो कोशिश करो कि आपकी ये जो कोशिशें हैं काम को बुनियाद से हिला करके रख दें। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क में, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी हो आग लेकिन ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। ये कुछ ऐसी लाइनें हैं जिसे मैं हर क्लास में कहता हूं। बेटा याद रखना, जब आप किसी काम को डेडिकेशन के साथ, शिद्दत के साथ करते रहते तो एक ना एक दिन आपको उसमें सफलता जरूर मिलती है। तो दिलों में शोला भड़का के चलिए, अपने जज्बात को जगा के चलिए, दिलों में आग लगा के चलिए और अपने काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म कीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंडिंग द सेशन। थैंक यू।